Hello friends, once again welcome to my channel Amol Tech Hub. So I already started the new lecture series NLP for beginners from zero to hero, that is from basic to advanced. Why zero to hero? क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस जो भी है with the theoretical, with the installation, with the application, with the all codes, ये सारे चीज़ें मैं बेसिक से एडवांस एक्सप्लेन करने वाला हूँ. Okay, so what is this NLP क्या है? So before starting the my session, if you like this my session, please subscribe and share to your friends also. Okay, and if you have any doubt you can put in comment. You are always welcome. So चलो start करते हैं हमारा session, that is NLP for beginners. So this is the first session. In this first session we are just going to take a introduction of that field, that is NLP. So NLP क्या है? So this NLP is nothing but a one computer technology. So उसका use क्या है? Just make a interaction between human being and computer. Okay, for example there is a scenario, मुझे मेरे दोस्त के साथ बात करनी की है. मैं कौन सा लैंग्वेज यूज़ करता हूँ? इधर मराठी, इधर हिंदी, इधर इंग्लिश, इधर पंजाबी. जो भी मुझे और मेरे दोस्त को समझ में आएगी वही लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगा. बट कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस मराठी, हिंदी, इंग्लिश एक्सेट्रा. सो कंप्यूटर को क्या पता है? बस बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज 0 and 1. सो फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैट कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग कौन सा लैंग्वेज होता, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? दैट इज NLP. ओके, सो in the India there are the near about 780 languages are used for make a conversion between the peoples. कितने languages है? 780. और in the world there are near about 6500 languages are available to make the conversion between the human being. So these languages we can say it is a natural languages. ये कौन सी languages है? Natural languages. Also it is called as, these languages are called as human languages because ये लैंग्वेज कौन यूज़ करने वाला है? ह्यूमन बीइंग. सो दैट्स व्हाई दीज लैंग्वेजेस आर कॉल्ड एज ह्यूमन लैंग्वेजेस. सो कितने लैंग्वेज से इन द वर्ल्ड? नियर अबाउट 6500. समझो अभी कंप्यूटर को मराठी हमने सिखा दिया, सो एक लैंग्वेज है क्या उसके पास सीखने के लिए? कितने हैं? 6500. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अंडरस्टैंड दिस ऑल द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग बाय द कंप्यूटर. ओके, समझो फॉर एग्जांपल मुझे किसी को पेन मांगने का है. सो व्हाट आई से, प्लीज़ गिव मी पेन. ओके, और हिंदी में होगा तो मुझे पेन दे दो. मुझे पेन देते हो क्या? नहीं, मुझे पेन तुरंत दे दो. सो कितना है? एक ही सेंटेंस कितनी बार बोल सकते हैं हम? सो देर आर दी वेरियस सिंटैक्सेस फॉर द ईच एंड एवरी दिस ह्यूमन लैंग्वेजेस. सो ये सिंटैक्स कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए इट टेक्स दी वेरी डिफिकल्टी. सो दैट्स वाई देर इज़ अ फील्ड NLP to solve the problem between interaction between the human being and computer. Okay, चलो, आई थिंक एवरीबडी यूज दी स्मार्टफोन, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा सब यूज़ करते हैं. यूनिक मैं भी यूज़ करता हूँ, मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता. व्हाट्सअप के बिना, फेसबुक के बिना, इंस्टाग्राम के बिना, स्मार्टफोन के बिना रह ही नहीं सकता. बट बिहाइंड दैट दिस ऑल टेक्नोलॉजी, उनके उसके पीछे क्या हो रहा है? सो इट जनरेट दी लॉट्स ऑफ डेटा. जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल पर मिनट इन अ फेसबुक कितने फ़ोटो अपलोड होते हैं? नियर अबाउट 2,08,000. इतने सारे फ़ोटो फेसबुक में पर मिनट अपलोड हो रहे हैं. और ट्विटर में देखो 3,50,000 ट्वीट हो रहे हैं. यूट्यूब पे देखो 1 मिनट में 100 आवर्स की वीडियो अपलोड हो रही है. सो इतना सारा डेटा जनरेट हो रहा है. सो टू एनालाइज दिस डेटा कितना डिफिकल्ट टास्क है. सो दिस फील्ड कॉल्ड एज बिग डेटा. सो बिग डेटा क्या है? यही चीज़ है. बिग डेटा मीन्स क्या है? देर इज लॉट्स ऑफ डेटा. समझो देखो अमेजोन पर मिनट 1,18,000 रेवेन्यू है उसका, अमेजोन का. ओके, अगेन गूगल हैव द सर्च क्वेरीज नियर अबाउट 3.5 million search queries for the Google. So these data generated, so we can say these kind of the information generated are in a different form. For example, I want to check the कौन से कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट लिया है अमेजोन से. सो दिस काइंड ऑफ द डेटा विल बी इन द फॉर्म ऑफ द आइदर टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल फॉर द यूट्यूब का डेटा किस में स्टोर होगा? वीडियो में. अगेन गूगल सर्च क्वेरीज का टेक्स्ट में, एक्सेट्रा. सो दिस ऑल डेटा आर
store in the different form. So this all data we can say it is a unstructured data, means कौन से भी एक ही फॉर्मेट में नहीं है, वो कितने फॉर्मेट है. So there are the so many formats. So this data called as unstructured data. ओके समझो, मुझे अमेजोन की कंपनी में से एक एनालाइज करने का है कि मेरा लैपटॉप की कंपनी है लेनोवो. सो लेनोवो का लैपटॉप कौन से कस्टमर ने लिया. सो आई वांट टू एनालाइज, आई वांट टू रीड दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स. सो जितने भी मेरे लेनोवो के लैपटॉप बाय किए कस्टमर्स ने, मुझे उनका सबका रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा. सो देर आर द लॉट्स ऑफ द पेजेस, वी कैन से द साइज ऑफ दैट डॉक्यूमेंट विल बी मच मोर. उनका साइज बहुत बड़ा होगा. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क. सो दैट टास्क इज सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस NLP. सो NLP क्या करता है, इट जस्ट एनालाइज दी दैट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो आपको देगा. सो दैट फील्ड वी कैन से टेक्स्ट माइनिंग ऑल्सो. सो अंडरस्टैंडिंग दिस बिग डेटा. चलो नेक्स्ट आगे जाते हैं. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टेक्स्ट माइनिंग. सो दिस टेक्स्ट माइनिंग we also called as it is a text analytics, and it is a artificial intelligence technology, and this technology use the method of the natural language processing to transfer the unstructured text in a document or into database. That is, for example, Amazon का डेटा है, एंड दैट अमेजोन का डेटा कौन सा है, कस्टमर और उन्होंने प्रोडक्ट कौन सा लिया है. सो वो डॉक्यूमेंट की साइज बहुत बड़ी है. सो वी कैन से इट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. सो मुझे क्या करने का है, एक पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न में मुझे वो डेटा चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड डेटा. सो दैट टास्क इज हैंडल बाय टेक्स्ट माइनिंग टेक्नोलॉजी ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. मी शॉर्ट में देखो, डायग्राम में मैंने दिया है, फिगर में दिया है, देखो फोटो में क्या है, इट चेक दी होल डॉक्यूमेंट, और मुझे पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डेटा चाहिए, दैट इज द टेक्स्ट माइनिंग. ओके नेक्स्ट important natural language processing. So before starting this natural language processing, I think everybody use the Google Assistant. मुझे दोस्त को एक मैसेज सेंड करने का, मैं टाइप नहीं करूँगा, आई जस्ट यूज द गूगल असिस्टेंट और गूगल वॉइस टेक्नोलॉजी. व्हाट इज दिस, दिस इज द NLP. सो NLP क्या करता है, ह्यूमन से एक तो टेक्स्ट में लेता है डेटा, और ऑडियो में वी कैन से दी स्पीच. सो उसको किस में कन्वर्ट करता है, टेक्स्ट में. So this NLP takes the input from the human being and that will gives to computer. अभी कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने की डिफिकल्टी होगी ना, वो कौन सॉल्व करता है, दिस NLP. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से अगेन ऑडियो टू टेक्स्ट कन्वर्जन, अगेन प्रोसेसिंग द लॉट्स ऑफ टेक्स्ट डेटा, अगेन डेटा टू ऑडियो. सो दैट इज, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर ह्यूमन बींग को कुछ तो आउटपुट दे रहा है, सो देर इज अगेन कन्वर्जन डेटा टू ऑडियो. सो वो भी कन्वर्जन कौन करता है, NLP. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दी चैटबॉट और गूगल असिस्टेंट. अगेन सी एलेक्सा, आई से एलेक्सा टू व्हाट इज माई नेम. सो मैंने कुछ तो डेटा उसको दिया है ना, व्हाट इज माई नेम. सो वो कुछ तो प्रोसेस करेगी, उसका सिंटैक्स क्या है देखेगी, बाद में एलेक्सा और सीरी मुझे रिप्लाई करेंगे क्या, योर नेम इज समथिंग डैश डैश डैश. Okay, so that is the NLP. So it interact with the human language, it takes the input as well as it gives the output in the form of the audio also. For example, voice recognition, speak recognition of our mobile, that is the NLP. So this NLP, it helps to the machine to read the text or speech and understand it and convert into some data, again it will give the output. So this NLP field is a combination of the computer science, human language and artificial intelligence. So it is a combination of three important field. Computer science, so it use the some of the concept belongs to, we can say the computer science machine language, we can say the compilers, again parsers, etc. So this belongs to computer science. Again human language means our language, Marathi, Hindi, English, etc. Again artificial intelligence, why, बिकॉज इट बिलोंग्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मीन्स क्यों, NLP क्या करता है, एक ऐसा मॉडल बनाता है. सो AI मीन्स क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उसका काम ही है क्या, एक मॉडल बनाओ, वो कुछ तो टास्क उसको ट्रेन करो और वो क्या कर देगा, रिजल्ट देगा. सेम थिंग विद द NLP.
So NLP is a combination of the computer science, human language and artificial intelligence. So this NLP have the two important component. We can say the parts of that NLP are the two. So what are the two important components? First one is a NLG and second one is a NLU. So that is NLG is for natural language generation and NLU is a natural language understanding. So I give the input to the Siri or Alexa as what is current date, or we can say the what is current time. सो एलेक्सा और सिरी को मैंने कुछ तो इनपुट दिया है. सो एलेक्सा और सिरी उस पर कुछ तो प्रोसेस करेंगे कि हॉट मीन क्या है, इज क्या है, उसमें वर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है, सिंटैक्स क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, एक्सेट्रा. सो दिस ऑल टास्क विल बी हैंडल बाय इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज NLU, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग. एंड NLG मीन्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल एलेक्सा मुझे कुछ तो रिप्लाई देगी या सिरी कुछ तो रिप्लाई देगा. सो दैट इज द NLG. So for example, Google Assistant को मैंने क्वेश्चन पूछा what is the current time, so और से what is the current temperature, so वो कुछ तो मुझे रिप्लाई देगा. So that gives the reply in the form of the audio. So that is it generate the again data. That data will be understand by the human being. So that is the natural language generation. So this natural language understanding deal with वो किसके साथ कनेक्टेड है? जस्ट अंडरस्टैंडिंग दी सिंटैक्स, अगेन पार्सिंग, एनालाइजिंग, ग्रामेटिकल सिंटैक्स ऑफ दिस ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस. एंड नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन इज बिलोंग्स टू वो कुछ तो ह्यूमन बीइंग को आउटपुट देगा मॉडल. सो दैट इज द नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन. सो आई होप everybody clear this basic intro of the NLP. If you like this lecture, please subscribe.